Finally, after the struggle of 40 minutes, we got the auto and right now we are heading towards the Tiger Point. And चलिए रास्ते में आप लोगों को नज़ारे दिखाते हैं कि क्या कहता है। बारिश तो बहुत शानदार हो रही है, अभी तो देखा होगा। और वहाँ पे फॉर श्योर व्यू बहुत अमेजिंग होने वाला है। इट्स गोइंग टू बी वर्थ इट ट्रैवलिंग दिस मच एंड आई होप टू इट शुड बी। तो चलिए आप नज़ारे के दर्शन कीजिए, देखिए हम लोग कैसे पहुँचते हैं वहाँ तक। Have you seen this guys? Like this is so awesome. Like let me tell you, like I'm totally charged up for the next month to work like hard. Yeah, like weather is so good. It's totally fog everywhere. Like आप अपने मतलब around 500 meters के range में भी कुछ नहीं देख पा रहे हैं. And it's so good. What an experience, man. Right now we are at the Tiger Point and currently we are heading towards the camping site from Tiger Point. It's just the half of the Tiger Point till now. Basically it's around 10 to 12 kilometers from this point, also Tiger Point. And let me show you how exactly the Tiger Point look alike, the fog and everything. Like guys, can you see this? आगे का कुछ नहीं दिख रहा है. The vibe, it's so good. Right now in this vlog, I'll be adding just a few clips of this road and everything. But after uploading this vlog, later uploading the whole, the route of this traveling vlog. Basically, I'll be uploading the, time lapse video, जिससे आप ये पूरा व्यू का मजा ले सकते हो. Virtually, I'll try to give you that thing. तो मैं टाइम लैप्स में पूरी वीडियो शूट करूँगा. यहाँ का जितना भी आसपास का व्यू है, ट्रैवलिंग है, कैसा है, क्या है, तो वो मैं टाइम लैप्स पे आपको पोस्ट करूँगा. तो मेक श्योर टू चेक दैट वीडियो एंड डू शेयर दैट वीडियो टू. तो वो टाइम लैप्स भी इंजॉय करेंगे. एंड आई एम टेलिंग यू गाइस, watching that video is gonna worth it. It's gonna worth your time because that view is so appealing. And my another brother doing a shooting for mine, he is making a time lapse for the video. So a big thanks to him. He's just shooting a time lapse video for me so that आप लोगों को time lapse video भी enjoy कर सकें. Okay. Like यहाँ मेरे पास ना एक्सप्रेस करने को वर्ड नहीं है. ये वेदर इतना अमेजिंग है. इट्स सो रिफ्रेशिंग. यू गाइस कैन फील. लाइक मेरी दिन भर की थकान उतर चुकी है. आई कैन नॉट सी एनीथिंग बट स्टिल आई कैन सी एवरीथिंग. वीडियो शूट करते करते आलम ये हो चुका है मेरा कि मेरी बैटरी मोबाइल की डेड हो चुकी है. ये लगा है मेरा पावर बैंक और इसको चार्ज करता है और कंटिन्यू आई एम शूटिंग द वीडियो just to give a virtual tour of this beautiful place. So if I am doing this much of work, it's your duty to make sure you like it, share and subscribe and do share among your friends. And I really wish you guys like this video and I don't know ये कैसी लगी होगी. Just let me know in the comment section कि आपको ये वीडियो कैसी लगी and express your thought of views after going through this video. And especially make sure to check the video of like time lapse which I'm gonna put down of this route because trust me you guys are gonna love that video. तो चलिए मैं अभी I'm going to stop vlogging for some time. रीजन बीइंग तब तक मेरा मोबाइल कुछ थोड़ा बहुत चार्ज है, उसके बाद मैं कंटिन्यू कर सकूँ बिकॉज कैंपिंग का भी आपको टूर देना ही है. एज यू नो इट्स मैंडेटरी फॉर मी. तो इसलिए मुझे लेट मी चार्ज माई फोन एंड देन आई विल कैच यू अप लेटर ऑन. Hello guys, hello everybody, how you guys doing? I'm doing pretty well myself, Mavyadim, and voila, here I am at the camping site and to show you guys what I'm going to do on this weekend. So stay tuned and make sure to like, share and subscribe before only because I'm pretty sure you're gonna like this video for sure.
सो आप लोग को ना सबसे पहले इधर का व्यू को दिखाते हैं। इस वीडियो के बाद तो आप पूरा व्यू टूर देखने वाले हो, व्हाट्स द प्लेस वेयर आई एम कमिंग एंड इट्स ऑल अबाउट कैंपिंग। सो अब से लेके सुबह तक जो भी होने वाला है, आई एम गोना शेयर इट विद यू गाइस, सो प्लीज स्टे ट्यून एंड सी द फुल लेंथ वीडियो, ओके? तो लेट्स गो अहेड इन द वीडियो एंड शो यू द होल लेंथ स्पेस। This is the place where we are going to stay for tonight and this is हाँ, तो यहीं बैठते हैं, चाय नाश्ता करते हैं, फिर चलते हैं। पहले आ जाओ, चाय नाश्ता कर लो, फिर निकलते हैं ना। Oh God, this is so amazing, guys. Trust me. See, Huzefa, just say hi. आपको दिखाया? Huzefa, say hi. You are in. Guys, this is the view where we are going to stay for tonight and I hope it's amazing, it's beautiful. The camp I have shown you. अभी जब टेंट के अंदर जाएंगे I'll show you guys from the inside. So आप लोग ने देख लिया वीडियो में कैसा है ये प्लेस, कहाँ मैं रहने वाला हूँ और क्या क्या होने वाला है। यू गाइस कैन लाइक अगर कुछ नहीं भी होगा, इफ यू आर लुकिंग फॉर अ रिलैक्सिंग वीकेंड स्पेंडिंग समवेयर इन नेचर टू हील योरसेल्फ, आई थिंक दिस इज द बेस्ट प्लेस। हाँ, थोड़ा अंदर है लोनावला से, बट इट्स वर्थ द ट्रैवलिंग। राइट नाउ काफ़ी देर हो गया, वी गॉट फ्रेशन अप एंड एवरीथिंग। बहुत ही मज़ा है, बहुत ही पीसफुल है, रिलैक्सिंग है, सिटी से दूर एक सुकून का दिन। लाइक इट्स फीलिंग, लिटरली इट्स फीलिंग अमेजिंग। ये अमेजिंग व्यू हो और चाय मिस कर दी जाए, ये बेइज्जती है चाय की, और जो मुझे बर्दाश्त नहीं, समझे? चीयर्स टू यू गाइस। एंड यहाँ पे बारबेक्यू आ चुका है, द स्टार्टर इज ऑन, द पार्टी इज ऑन गाइस। लाइक इट सीम्स so tempting and happening, man. I can't tell you. So good, man. I absolutely loved it.
Yeah, man, this is the place from the inside. Let me guys show you. It's been a long day from since morning. Like इससे पहले वाले vlog में आपने देखा होगा we were towards the valley of Mathiran, and from there we came down and again to Lonavla, and traveling it was so hectic and so tiring day. So just going to sleep and to see you guys in the morning. Good night. Morning guys, just wake up and like it's feeling so refreshing. I mean कल रात को I went to sleep very early just because काफ़ी 2 दिन से traveling and was getting so hectic, and just now woke up. It's around 7 a.m. in the morning and still weather is quite amazing. Let me show you how is the place and the weather. Okay, my pouch and just got freshen up, done, like now feeling so refreshing. Like कल रात को because of traveling and like many of the other things, I was having so much of headache, so that's why I went to sleep early. And अभी काफ़ी refreshing लग रहा है, and it's obvious why won't be it refreshing if you when you wake up with such a beautiful view. Can you guys see that behind? And by the way, wishing you all a very happy Independence Day. I'm just going to have my oh, just gonna have my good dose of water early morning after waking up. Like waking up to this view, taking out time for yourself, spending in nature is so rejuvenizing, man. So rejuvenizing, so refreshing, I think everyone should take out time for themselves. And it's not mandatory you go for outing for 2 days, 1 day stay. Even you can do something which relax you, which helps you to heal yourself. Even you can pamper yourself. You can go to a cafe, have some good food. You can visit to a salon. I don't know why taking care of herself, if a man is taking care of herself, is considered to be so feminine, generalizing them. Like if you're taking care of yourself, it has nothing to do with the gender. So make it normalized, dude. That's what I'm saying. Make things which makes you feel happy. By the way, चलो यार ये ज्ञान की बातें छोड़ो. It's your call. What you guys have to do for yourself. What I think, which helps me out to release my stress. That's what I was sharing with you guys. And यार हल्की हल्की बारिश, ये व्यू बहुत सही है.
now it's time to check out and we are checking it out. क्योंकि थोड़ा जल्दी निकल रहा हूँ because of the traveling issues and convince, so that's why we are heading little faster क्योंकि यहाँ पे बारिश वगैरह का issue है. So okay, I'll let you know later on because right now in hurry we are looking for something to drop us to the bus station. Finally we left from this place known as Moregaon, and we took a lift from here and we are heading towards the Lonavla station, and from there we'll be taking a cab. So let's see how the journey goes ahead, because like overall it was a good experience staying in a camp. It's just that कि वो बहुत अंदर है, थोड़ा traveling issues है. अगर आपका खुद का conveyance है then it's going to be way more easy. So yeah guys, that's all for this vlog. Looking at camping, how was my experience, and if you want to guys make me a separate video about the whole complete information regarding to camping, how to come, so do let me know in the comment section. So I'm ending this vlog because उसके बाद घर जाना है वही लोकल ट्रेन, उसमें ऐसा कुछ खास है नहीं खाने. So I'm ending this vlog. If you like this video at any certain point, just make sure to like, share and subscribe, and take the virtual tour of Lonavla. People out there sitting out there who cannot come over here, take the virtual tour from here, and thanks for later. Bye bye.